25. SEER Sports Cricket Club are taking on Students Cricket Club, and we're sorry for the inconvenience as we have joined you lately. The Students Cricket Club are batting first. 2 wickets have fallen earlier on into this first innings. As we see, SEER Supports have started in a positive way. They have started fantastically well in this grand finale. 2 down already. Yunus yine. As the two heavyweights of the game go head to head in a mouth-watering clash. It's the fight for the title as Students Cricket Club have been jolted early, they have been dented early with 2 quick wickets in the very first over by Lon Abid. But now all eyes will be on this man, Fayaz Sarwar, who is up to the crease. As Lon Momin is going to continue from the commentary box end. It's 34 for the loss of 2 after 3 overs. Fayaz Sarwar and Danish Nazir are trying to take on the bowlers, trying to put them under pressure after those 2 quick wickets. And the very first over by Lon Abid. The Fayaz Sarwar is batting on 7 of 4, but Danish Nazir has looked to be very attacking with the bat. 22 of just 10 bowlers, trying to take full use of the field restrictions, those 6 overs where you just have 2 fielders outside the 30-yard circle, where you just can place 2 fielders at the boundary ropes. And about Fayaz Sarwar, he can be handy with the bat, he can be so dangerous with the bat. He's always a man who can churn out runs, he can propel those runs in each and every part of the valley. 34 for 2, Momin to continue. He conceded 13 in his very first over, and in his second he gets ready to bowl from the commentary box, and Fayaz Sarwar to face. Over the stumps goes Momin. It's a better line this time as he forces Fayaz Sarwar to be defensive. He comes forward and drives him back to the bowler. There is no addition to the total. In a finals game where you have that additional pressure on you, you're batting first to try to bat freely and put 10 runs on the board, and you give your bowlers a sniff to bowl upon and a good target. Wicket keepers standing way back. They have 5 fielders inside the ring on the offside. Momin has got it, a full toss and driven beautifully by Fayaz Sarwar. That is a quality shot, but the fielder backing up will have to wait and watch. I guess the ball hits the goal post and it has been signalled as a dead ball. That was a beautiful shot from the bat of Fayaz Sarwar. Absolutely delightful off his bat, but unfortunately the ball hits the goal post, which is in the middle of the ground, and it has been signalled as a dead ball. Momin to continue. Fayaz to face him as he goes over the stumps once again. He's bowling good lines and lengths here, Momin, leaving that full toss ball aside. Those 2 bowlers were right up to that off stump line, on that 5th or 4th stump line, and he constantly bowl on that line. He can trouble the batter, no doubt about that. And Fayaz Sarwar, he is a technically sound batter. He likes to go after the bowlers. We'll have to wait and watch. Can Momin be able to stop the carnage run full at this moment? This has been driven on the up, and it goes past backward point, racing away into the boundary for 4. Just outside off stump to Fayaz Sarwar, seeing the width, and he cashes on this time, throws his bat, throws that kitchen sink at it, and it runs away past backward point and into the fence for 4. 38 for 2, Momin proving to be expensive today. 17 in his over number 2. As Fayaz Sarwar gets ready once again, away goes Momin. A bit of short-legged delivery as Fayaz goes off the back foot, clips it nicely. He clips it off the hips, going down to deep backward scale leg until the fielder covers good ground. He gets to the ball, cuts it off in the meantime. Easy couple for both the batters. It's 40 for the loss of 2 after 2 wickets in that very first over. It looked like going to be the Students Cricket Club Martyers have been dented early, but credit goes to Fayaz Sarwar and Danish Nazir.
for putting on a show with the bat. A good little partnership is going on, trying to rebuild the innings, and this has been driven on the up once again, bowling it full wide outside the off stump. As Fayaz comes down the track, drives him down to wideish mid-off. He'll fetch him a single. 7 of 5 bowlers until now of moment is second over. 41 for the loss of 2 it is. To winning the toss and opting to bat first. Students Cricket Club Varpura got off the worst possible start and they lost their 2 batters in over number 1. They were 2 for 2 after the first over, but now these both the batters are trying to stitch that partnership where you can get them back into the contest. Done with over number 4 as well. 41 for 2. The scoring rate is good. Lone Navid who bowled that first over where he got the wicket as well. 2 overs 1 for 21, and Lone Momin 2 overs none for 20. He'll be hoping to get the wicket off Fayaz Sarwar. Even Danish Nazir is looking in a fine touch there. He is timing the ball nicely, striking at 200 at the moment. 22 of just 11 bowlers. 2 fielders can be placed outside that 30-yard circle in those first 6 overs. The fielder restrictions you have. Once again, let me remind you, it's the grand final. It's the title clash. Students Cricket Club Valpura are going head-to-head against SEER 11 in this Police Martyers Cricket Cup. In the meantime, Wani Ashraf has joined the live broadcast, watching on Facebook platform and Global News Network, and you can enjoy the game on YouTube as well, or you can watch it on JK Sports Discovery. And he's watching us from Kanihaba Magam and Mir Javed as well. First ball of the fresh over, and it's Imran Manzoor who has been introduced into the attack, and it's the first change by the captain of SEER 11. His first ball has been worked away on the onside for a single. 42 for the loss of 2. Sarwar on 15, Danish Nazir on 22. A good partnership of 40 runs between these two. And this will lift the mood in the dugout of Students Cricket Club. This time Fayaz Sarwar nicely on drives him. Long on is the batters will be happy with the single. He can do the job in singles and doubles, try to get the good partnership on for the team. A small little partnership is building, and you can say it's a rebuilding phase for the team after those 2 early wickets in over number 1. And Sarwar to face, who is on 15. It's a drag down, he goes off the back foot and smokes him away and into the stands for 6. A half tracker that was, and picks the length very early for Sarwar. And he deposits him into the stands. Quality stuff that was. Off the back foot, and the ball flies away off his bat. Quality stroke from a quality batter. 8 for 3 for Imran Manzoor. 49 for 2, and Fayaz Sarwar moves on to 21. 5th over in progress, and it's going to be, at this stage of the game, it looks like it's a fine contest between bat and ball. The way Fayaz Sarwar is timing it, and once again he goes past that point fielder, and the ball dribbles away into the fence for 4. Now he is showing his class, he is showing his worth with the bat, and you know Fayaz Sarwar mostly is famously known as the run machine of North Kashmir, and that is why he is known as so. He is hitting the ladder at this stage of the game. Pressure was on you, but now he is trying to take on the bowler, trying to put him off. As Imran goes again, wraps him on the pad. It was worth a shout, but umpire says it's down the leg side. 52-run partnership between these two of just 24 bowlers. 53 for 2, final ball coming. Fayaz laps him away, and 1 bounce into the fence for 4. This is improvisation at its best. Down the leg side, and you see immense pressure on the bowler. Lots of pressure on the bowler now. 6 off that half tracker, the drag down delivery, and now spills that ball down the leg side, and quite an easy pickings for a batter. And you got fielders inside the ring. You just had 2 fielders protecting the boundary, patrolling the boundary line.
And Fayaz helps him away, and it gets one bounce and into the fence for 4. 57 for 2, and now Students Cricket Club Varpura running away with it. Away trying to take on the bowlers of SEER Sports. SEER 11 have no answers and no clues whatsoever against this batting genius. He moves on to 29. Lone Momin is going to bowl the final one of the field restrictions. First ball has been whipped away, chance of a run out. Needed a direct hit, Lone Momin. He got quickly to the ball, turned around and was having a shot at the non-striker's end, but he misses, and in the meantime the batters cross for an easy single. 58 for the loss of 2. As you can see straight away, the pressure is on the bowling side, the pressure is on the fielding unit, because both the batters are going all guns blazing now, and this time trying to drive the ball, gets an inside edge. Nearly dragged on to the stumps. Lucky escape for Fayaz over here, and the short fine leg fielder tidies the things up inside the 30-yard circle. 6th over in progress. A fine start for the side of Students Cricket Club Varpura after those 2 quick wickets. A good partnership going on, building a partnership for the team, and trying to lay that foundation, trying to drive him on there. There is an appeal for caught behind. We'll have to wait and watch. Oh no, says the umpire. Loud shout, that was extra bounce on offer from Lone Momin. The bowler went up and wicketkeeper went up straight away. They were appealing even though they were pleading for the umpire, but he was unmoved there. And you can see the fielders, the bowler, the wicketkeeper looks dejected. They were damn confident on that. Fayaz Sarwar has nicked that one, but umpire was unmoved. They were up straight away when the ball went past to the bat. The wicketkeeper got the ball into his gloves. He was jumping in joy. So was Lone Momin, the bowler. So were the close-in fielders. Absolute drama happening into the centre. And umpire there soaking all that noise, soaking all that pressure. Here is that close-in angle, the replays of that previous shout of caught behind. No doubt extra bounce one was an offer, and I think there was clear gap between bat and ball. That excitement was because the ball jumping off the surface, and they thought that there was an outside edge. I guess it's a fantastic decision there by the umpire. It's a great decision there. Next one, Momin goes to Fayaz, down the leg side. This is off the back foot he goes, finds the gap, and it runs away down to the fine leg boundary for 4. And rubbing salt to the wound as he was put down when he was on 4. That was an absolute dolly at long gone. But now Fayaz Sarwar is spilling that salt on the wounders of SEER Sports, the bowlers. Just tickling the ball fine. He just needed to tickle that one, and it runs away into the boundary for 4. Next delivery. And Fayaz waits for the ball, tucks it on the offside. A quick single between these two. A tap and run. Just sneaking that single right in front of the nose of the fielders at back foot point region. And single off the ball number 5. It's the penultimate, was the penultimate ball, now the final one coming up off over number 6. 63 for the loss of 2 at this stage of the game. Students Cricket Club Varpura at this stage. And our final delivery, oh, that is a beauty from Lone Momin. Jaffa, the ball once again kicks off the surface and it whizzes past the nose of the batter. Lone Momin was up straight away, but there was clear gap between bat and ball, a daylight between bat and ball. Excitement fills the air as you see two powerhouses or two heavyweights are going up against each other. Done with the power play as they stand at 63 for the loss of 2. बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका। तो मैच की सूरत हाल, स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा का स्कोर 63 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि पहले ही ओवर में ये 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन शराकतदारी कायम होती हुई यहां पर फयाज सरवर और दानिश के दरमियान। इस वक्त 63 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब बॉलिंग मार्ग पर देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया गया है SEER 11 की जानिब से। ये मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला,
और इस वक्त फाइनल मुकाबले में स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा और SEER 11 की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले। स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 स्कोर 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और 10 की औसत से रन आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन उसके बाद फयाज सरवर और दानिश नज़ीर की बेहतरीन जो है शराकतदारी यहाँ पे कायम होती हुई और स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब की टीम यही वजह है कि 10 की औसत से रन्स बना रही है। और पहले फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के ओवर मुकम्मल होते हुए अब बॉलिंग मार्क पर बुलाया गया है तारिक को और तारिक की गेंद का सामना करेंगे फयाज सरवर। नॉर्थ कश्मीर में रन मशीन के नाम से जाना जाता है फयाज सरवर को। बैकफुट पर गेंद को खेला, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद को खेला जब तक गेंद को फील्ड किया जाता उसके लेग बाउंड्री से फील्डर आए, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64, 2 विकेटों के नुकसान पर। सोहेल डार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इशफाक मानी, अब हमें जरूर जो है बताइएगा। वार मुदस्सिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वार मुदस्सिर कमेंटेटर। आप गालिबन JK स्पोर्ट्स प्लस के कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े हैं। अगली गेंद तारिक की ओवर द विकेट गेंद की बैकफुट पर मोहतात अंदाज से बिल्कुल जो है सम्मान देते हुए गेंद को और गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चितलोरा रफियाबाद से सोहेल डार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें YouTube और Facebook पर बैक वक्त देख सकते हैं, Facebook पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क, जबकि YouTube पर JK स्पोर्ट्स डिस्कवरी। तारिक 7वें ओवर की अगली गेंद के साथ फयाज सरवर के लिए। फयाज सरवर 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को खेला स्लिप की जाने, वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ अच्छी, बल्कि दानिश नज़ीर स्ट्राइक पर थे और स्लिप की जानिब गेंद को खेला और कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। उमरदार इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज सूरज जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ और आसमान गहरे काले रंग के बादलों से गिरा हुआ है, उसी वजह से गालिबन जो है डिस्प्ले पे आपको दिखाई दिया होगा, लाइट उस तरह की नहीं है। इस दौरान गेंद को खेला दानिश नज़ीर ने उसके लेग की जानिब, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है उसके लेग बाउंड्री पर, रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65, 2 विकेटों के नुकसान पर। तारिक बॉलिंग मार्क पर अपना पहला और पारी का 7वां ओवर फेंक रहे हैं तारिक। शाहरुख अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ साथ एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, वानी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तारिक अगली गेंद के साथ इस मरतबा फयाज सरवर सामना करेंगे, जिन्होंने पहले ही 35 रन बनाए हैं। गेंद को खेला, हालांकि गेंद की रफ्तार बहुत कम, स्लोवर वन और लॉन्ग ऑन से फील्डर को काफी आगे आना पड़ा। इस दौरान दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और मिस फील्डिंग के जरिए तीसरा रन भी हासिल होता हुआ, तो 3 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 68 हो चुका है, 2 विकेटों के नुकसान पर स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा का। SEER 11 के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल कप की दिफाई चैंपियन है गालिबन ये टीम और इस फाइनल मुकाबले में जो है स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का सामना कर रही है। अगली गेंद तारिक की, इस मरतबा गेंद को जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, विकेट कीपर ने स्टंप्स बिखेरी लेकिन कोई नुकसान नहीं। 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, मजमूई स्कोर 68, 2 विकेटों के नुकसान पर। तारिक ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए और अब दानिश नज़ीर 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 गेंदों का सामना किया दानिश नज़ीर ने, जबकि 38 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं फयाज सरवर, जिन्होंने कुल मिलाकर 20 गेंदों का सामना किया। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी इस मुकाबले में हमारे साथ जुड़ सके। जुबैर तांत्रे, बहुत बहुत शुक्रिया। वार इम्तियाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ मीर फिरदौस हमारे साथ जुड़े हैं। MET स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में इस वक्त ये मुकाबला जारी है, सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला। डार जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। मीर फिरदौस हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 9वें ओवर में अब देखना हो, 8वें ओवर में देखना होगा किस गेंदबाज को बुलाया गया है। 8वें ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद को खेला दानिश नज़ीर ने लॉन्ग, बल्कि फयाज सरवर लॉन्ग ऑन की जानिब, मिड विकेट की जानिब, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 69। शब्बीर अहमद है बॉलिंग मार्क पर।
शबीर अगली गेंद के साथ इस मतबा दानिश नजीर के लिए गेंद को खेल दिया एक मतबा फिर स्केलर बाउंड्री की जानिब जहां पर गेंद को फील्ड किया गया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब 1 रन का इजाफा मजीद स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का 70 2 विकेटों के नुकसान पर पारी का 8वां ओवर जारी। फयाज सरवर सामना करेंगे शबीर अहमद की गेंद का बैक फुट पर गेंद को खेल दिया ऑफ साइड की जानिब जहां पर सुपर कवर पर गेंद को फील्ड किया गया 1 रन बनाने का मौका 1 रन हासिल बल्कि रन बनाने का कोई मौका नहीं। फयाज सरवर एक मतबा फिर सामना करेंगे गेंद की बैक फुट पर इस मतबा उछाल लेती हुई गेंद और गेंद को निकाल दिया मिड विकेट की जानिब जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर आए 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा एक मतबा फिर के सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप का ये फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है MET स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में। एक मरतबा फिर 1 रन का इजाफा स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 72 हो चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर 7.5 ओवर्स के बाद। 8वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे शब्बीर अहमद अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं पारी का 8वां ओवर। पहले ही ओवर में 2 विकेटें गिरी थी लेकिन उसके बाद बेहतरीन जो है शराकतदारी और इस मरतबा गेंद को खेला हवाई फायर और गेंद सीधे 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर जाके गिरी है। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे अदनान नजीर हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये छक्का आता हुआ फयाज सरवर के बल्ले से। फयाज सरवर इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है स्कोर है 78 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए सीर बल्कि स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का। And Fayaz Sarwar is proving to be a driving force of this batting lineup. Collapse happening in that very first over with 2 wickets down, but now this game is nicely poised for Students Cricket Club Varpura. All credit goes to this partnership and both the batters, the way they're milking the balls away in the gap, the way they are taking on that attack on the bowlers whenever they face the bat delivery. As in the meantime the fresh over begins and he goes off the back foot once again, works it away fine and we'll get a single. It's not always about hitting the ball out of the park, you go for 6s and 4s only, and you know that singles and doubles have that equal importance. Pick up those gaps regularly to get those singles and building an innings together will really get you up to a strong position in this game. With 9th over in progress, 79 for 2. As Tariq is trying to take a pace off the ball and this time Fayaz launches him away. It's high up in the air but a long on fielder just watches the ball as it sails over his head and into the ropes for 6. He's constantly trying to take that pace off the ball, trying to bowl as slow as he can. I know Fayaz Sarwar gets one into the slot and he launches him away. An absolute biggie that is from the bat of Fayaz Sarwar. 50 up of this batting genius, just 25 balls he has faced. Next one, a slower delivery again as he comes forward with bat and pad close to each other and just drives him on the offside, overthrows. That is what pressure can do. At lot times you've seen that it's all about handling that pressure. If you can't handle the pressure, if you can't hold your nerves, you can leak runs at will, you can bleed runs at will. You see, that was just a tap and run and then the fielder overthrowing. He got a single in that previous over where it could have been just a single. He tried to put pressure on the fielder trying to take him on and he fumbled, gave away 2 more runs. And those small little mistakes can cost you the game at the end. This one just works him on the onside. This is calculated cricket by Fayaz Sarwar. This is brilliant cricket by Fayaz Sarwar. Just works the ball on the onside, knowing that the fielders were stationed deep at the boundary ropes. They had enough time to cross for 2 more. 89 for 2. Say SEER 11, they have to find those ways to get wickets now. They have to find those ways to put pressure on the batting unit. As at this stage of the game, they are trying to run away with this one. An 88-run partnership between these two, and this can prove to be a match-deciding one. And you know it's a finals game. You can't afford to drag this game away. You can't afford to take. Can't afford that these two batters will bat deep or bat till end. And when you know about Fayaz Sarwar, he is the man who can really win you games. He can take this game. He can snatch this game away from you.
with 90 score on board for the loss of 2. Tariq, who is in his second over, none for 17, bearing that first over where they lost 2 wickets and just scored 2 runs. And after that, it has been, we can say, a one-way journey. It has been the journey which has belonged to these 2 batters. Credit goes to Danish Nazir as well for sticking out. What a shot this is. It's in the air and it has been taken. Looked like the ball will sail over the fielder's head. You can see he just whips the ball off the pads. It was just a simple whip, but unfortunately picks out the lone fielder at deep backward square. Doesn't make any mistake, and the partnership which was proving to be threatening, a partnership which was proving to be very dangerous, has been broken. And it is Tariq who has broken through the stand. He has got rid of Danish, who's giving that good company to Fayaz Sarwar. He departs on 28 of 21 balls. And 89 run stand has been broken, 90 for the loss of 3 now. And Tariq, as I said, he was constantly trying to pull that length back. He was constantly trying to slow down the pace. He wasn't trying to give the batters that pace. And as a result, the batter was forced to play that shot. He was trying to force it, was trying to get that power behind the shot, but unfortunately doesn't get that one, and find as the fielder at deep backwards. Scarlag has to depart now. Played a good cameo, departs on 28 of 21 balls, but he stayed there and got a good partnership with Fayaz Sarwar, and got their team to a good partnership at this stage of the game. You can say that they are at a respectable position. And in the meantime, Shahid Mudassir is watching the game, is enjoying the game. Yes. Yeah. And you can see that when the replays and each and every one was up against Fayaz Sarwar, the closing angle, you can see Lon Momin, he generated a lot of bounce onto that, and Fayaz Sarwar was trying to drive him on that, and you can see the reaction of Fayaz Sarwar as well. And you saw each and everyone went up to appeal for that caught behind. Wicketkeeper was jumping in joy, but there was clear daylight between bat and ball. And in the meantime, Rishi Tajammul and Munna Yattu is also watching with Sadiq as well. As we thank each and everyone for showering the 11th Sport, for staying connected with us on the Facebook platform of Global News Network. And you're watching on YouTube, JK Sports Discovery, this game live and exclusive. Thank you, Munna Yattu. And in the meantime, the new batter is in. I guess the scorecard hasn't been updated yet, as Danish Nazir is back in that, and Tariq was able to get rid of him. And this time driven back to the bowler. There is no addition to the total. And to all the beloved viewers, thank you very much, Shahid Mudassir, Adnan Nazir. Zubair Tantri is watching with Arshia Zubair as well. And this time has been driven down to long on. It was on the up, he gets it in the gap. The fielder has to come across to cut the ball off at the boundary. Shaukat Mir is the new man as he gets off the mark with the brace. And the halfway stage of the game, going more than 9 runs per over. It's handy run rate for Students Cricket Club Warpur, and on this ground he can take 160, 170. It will be a good score, and got a good bowling lineup. He can really get a match out of this one. Oh, that's a quality shot off the back foot, fantastic shot, and using the depth of the crease very nicely, bisects that point, and gully fielder, no third man backing up there. They had deep point, but he had no chance at all as the ball races away. The outfield is lightning fast, and you get the ball in the gaps here, he can get runs thick and fast. And next ball off the back foot he goes, and it's always important as a batter, you have to cover your basics, your front foot game, your back foot game as well. And we have seen in this over the way Shaukat Mir is, he's been, that's what we call minimal in his footwork, and nimble in his footwork. That previous ball coming down the wicket, getting it down to long on to get a brace, then off the next delivery. Picking the length is important. He picks the length nicely, and using the depth of the crease nicely gets it past that backward point and gully fielder as the ball runs away into the fence for 4. Tariq to start the proceedings of the fresh over at the halfway stage. They stand at 98.
It's 9.8 runs per over. A healthy run rate in terms of a T20 game, in terms of a shorter versions of the game. You got wickets in hand and you can really go hard at the backstage of the game. You can really punish the bowlers, and until that 15th, 16th over, Students Cricket Club will be hoping that Fayaz Sarwar will try to take that game deep. Once again he goes off the back foot, and just trying to get those singles and doubles constantly, trying to rotate the strike, and that's what you need to do. And once again I want to inform you, let me remind you, it's only 16 over game per side. That is the information I have got. So just 6 more overs left after that, and if they get 10 and 11 runs per over, it will be 160, 170. That will be a fantastic score on board inside 6 overs, inside those 16 overs when you're chasing 10 runs per over. This time he goes down on one knee, goes down to long on for a single. This stage they cross that 100 run mark. They stand at 101 for the loss of 3 at the halfway stage of over number 11. The batters have got a job to do with 6 more overs, 5.5 overs left now in this game. They will be pushing hard to go beyond 160 in a finalist game. You have a good number of runs on board, and you're giving your bowlers a chance to bowl on that score where they can feel they've been comfortable on. Fayaz Sarwar, what can I say for this man? A genius with the bat, a master with the bat, and he punches the ball off the back foot down to sweeper coverage, and just a single is because the outfield is too quick and the ball races away off the turf, and so you put the ball in the gap so you can get number of runs. 102 for the loss of 3. And in the meantime, Dar Qayyum is also watching the game, and here we got the prominent commentator of our Rafiabad area, Dar Javed. Walaikum salam, brother. He's the official commentator of Sultan Warriors and the owner of JK Sports Network as well, enjoying the game. As Tariq goes once again over the stumps, short and wide outside that off stump. He was trying to cut that Shaukat Mir, but doesn't cover the line of the ball, and it goes past the outside edge and into the gloves of wicketkeeper. 102 for the loss of 3. We're in over number 11. 5 more to go after that, and it's an evenly poised game at this stage. It's an evenly poised game at this moment. He's going to make those inroads. Next one, Fayaz clips him on the onside. It's in the air. It's Shaukat Mir who hooks it in the gap, and it has been signalled as a dead ball. Once again, you can see the signal from the umpire. The ball hitting the goal post there, right in the middle of the ground, and the ground rule is stay that once the ball hits the goal post, it will be deemed as a dead ball, and it is a dead ball now. 102 for the loss of 3. Dar Javed is right next to me to the left side, and will be commentating in the next over as Tariq goes for the final time. He backs away, guides it on the offside. He was trying to leave the crease, was trying to go for the big shot, but the bowler was clever there, bowling it in onto the stumps in that middle and off stump line. He forces Fayaz Sarwar to push that one on the offside for a solitary run, done with the 11. It's 103 for 3, 5 more overs to go, and they will be trying hard with wickets, 7 wickets in hand, and they will definitely be trying to go after the bowlers now to fetch at least 60 more runs in those 5 overs to get a good score on board. बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका। तो डार जावेद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 103 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर, और ये फाइनल मुकाबला 16-16 ओवर्स पर मुश्तमिल है। फैयाज सरवर की विकेट जो है वो यहाँ पे SEER 11 के लिए कीमती होगी, क्योंकि 60 रन पर खेल रहे हैं। 31 गेंदों का सामना किया, 200 के करीब का स्ट्राइक रेट फैयाज सरवर के पास, और फैयाज सरवर की विकेट देखते हैं क्या हासिल करने में कामयाब होंगे। शब्बीर अहमद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। फैयाज सरवर के लिए बल्कि शौकत मीर के लिए हवा में गेंद को खेला, फील्डर आ गया है और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बॉडी लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तो 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 107 हो चुका है। अभी भी कुल मिलाकर जो है 29 गेंदों का खेल पहली पारी में बाकी, और देखना होगा इन 29 गेंदों पर मजीद कितने रन जोड़ने में कामयाब होंगे और क्या टारगेट यहां पे सेट होता है। शब्बीर
शौकत के लिए बैकफुट पर गेंद को खेल दिया है, 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। आजिम सुबहानी डार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब फयाज सरवर स्ट्राइक पर है और शब्बीर अहमद की गेंद का सामना करेंगे। फयाज सरवर 60 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शब्बीर अहमद पहले से ही विकेटें छोड़ दी और ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है, देखना होगा। और गेंद 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से, 4 रन का इशारा आता हुआ और 4 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 112 हो चुका है, जबकि फयाज सरवर का इनफरादी स्कोर 64-32 गेंदों का सामना किया फयाज सरवर ने। अगली गेंद का सामना करेंगे। गेंद की एक मरतबा फिर विकेटें कवर की थी और इस मरतबा मिड विकेट की जानिब फील्ड के गेंद को फील्ड किया गया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 114। इस ओवर में कुल मिलाकर अभी तक जो है 11 रन आए 4 गेंदों पर, 11 रन आए हैं। फयाज सरवर एक मरतबा फिर सामना करेंगे गेंद का। फयाज सरवर के लिए इस मरतबा गेंद को खेला गली की जानिब, पीछे फील्डर मौजूद और वहां पर देखना होगा क्या विकेट गिरी जी नहीं और 1 रन मुकम्मल होता हुआ। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में 115 हो चुका है। मजमूई स्कोर 12वें ओवर का खेल जारी है, इसके बाद मजीद 4 ओवर्स का खेल आना बाकी। अभी तक इस ओवर में 14 रन आए और आखिरी गेंद फेंकेंगे शब्बीर अहमद। आखिरी गेंद फेंकेंगे, आखिरी गेंद के साथ शब्बीर अहमद गेंद की और इस मरतबा गेंद को निकाल दिया फाइनल की जाने। फील्डर उस ओवर कोई मौजूद नहीं, सिर्फ फील्डर गए, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो कुल मिलाकर 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर 117, 3 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपोरा का 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 117, 3 विकेटों के नुकसान पर फयाज सरवर 67 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 34 गेंदों का सामना करते हुए, जबकि शौकत मीर ने 12 गेंदों का सामना किया और 15 रन पर खेल रहे हैं। 3 ओवर में 30 रन दिए शब्बीर अहमद ने। इमरान नजीर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान नजीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वानी मंजूर भी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आजिम सुबहानी डार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डार जावेद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब बॉलिंग मार्क पर तारिक अहमद आए हैं। तारिक सामना करेंगे फयाज सरवर। फयाज सरवर सामना करेंगे तारिक की गेंद का। विकेट पहले से ही कवर की, गेंद को खेल दिया है और गेंद सीधे 6 रन के लिए मैदान से बाहर। आपको रीप्ले में जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से पहले से ही इरादा किया था गेंद को खेलने का स्केल की जानिब और विकेट कवर करके ऑफसाइड की जानिब बहुत ज्यादा है शफल किया और 6 रन के लिए गेंद को खेला। फयाज सरवर इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 73 पर पहुंच चुके हैं 35 गेंदों का सामना करते हुए और 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट फयाज सरवर के पास। फयाज सरवर एक मरतबा फिर सामना करेंगे तारिक अहमद की गेंद का। 13वें ओवर का खेल जारी, 123, 3 विकेटों के नुकसान पर वारपोरा क्रिकेट क्लब का स्कोर। फयाज सरवर के लिए अगली गेंद, इस मरतबा गेंद को खेल दिया है फाइनल की जानिब और कोई फील्डर तैनात नहीं और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन को छूते हुए 4 रन के लिए लगातार रन आ रहे हैं फयाज सरवर के बल्ले से। फयाज सरवर इस मरतबा जो है फयाज सरवर की बल्लेबाजी, फयाज सरवर एक मरतबा फिर सामना करेंगे। 123 हो चुका है, बल्कि 127 हो चुका है गालिबन स्कोर। इस मरतबा हल्के हाथों के साथ खेला गेंद को और 1 रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मुकम्मल। 128, 21 गेंदों पर 28 रन की, बल्कि 38 रन की शराकतदारी हुई है फयाज सरवर और मीर शौकत के दरमियान। फयाज सरवर 38 रन पर खेल रहे हैं 37 गेंदों का सामना करते हुए। बट आमिर, इमरान नजीर और मेराजुद्दीन भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तारिक सामना करेंगे शौकत, शौकत के लिए और इस मरतबा हवा में शॉट फील्डर गेट के नीचे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और लॉन्ग ऑफ बॉडी पर ये विकेट हासिल हुई है। तो शौकत के इनिंग का खात्मा होता हुआ। अबू बकर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम फ्रॉम सोपोर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। महकमे पुलिस में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि इसी मैदान से इस
ग्लोबल न्यूज नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। आजिम सुबहानी डार, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज इज ए गन प्लेयर लिख रहे हैं आजिम सुबहानी डार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चौथी विकेट गिरी शौकत मीर के रूप में 128 के स्कोर पर और 13वें ओवर का खेल जारी। स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का स्कोर है 128, 3 विकेटों के 128 4 विकेटों के नुकसान पर। शौकत एक छोटी सी पारी 13 गेंदों पर 15 रन की पारी खेलने के बाद पवेलियन वापस जा चुके हैं और तारिक अहमद के खाते में जाने वाली विकेट 4 गेंदों पर 11 रन दिए तारिक अहमद ने और विकेट हासिल की अभी इस ओवर में शौकत के रूप में। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आए हैं जो साथ निभाएंगे फयाज सरवर का। आमिर डार हमारे साथ जुड़े हैं, फयाज सरवर रन मशीन लिख रहे हैं। मीर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, आप लिख रहे हैं SCC प्राइड ऑफ जैनगीर बेल्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आजिम सुबहानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आए हैं जो साथ निभाएंगे फयाज सरवर का। फयाज सरवर नॉन स्ट्राइक एंड पर है और स्ट्राइक पर है इशफाक। जो नए बल्लेबाज आए हैं इशफाक अहमद वो आए हैं और लोन सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम सोपोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोन सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी महकमे पुलिस में जो है अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान गेंद को खेल दिया, कवर से फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। और अब तारिक अहमद की आखिरी गेंद का सामना करेंगे फयाज सरवर। यह देखना होगा फयाज सरवर ने क्या इरादा जो है जहन में रखा है इस गेंद पर, यह देखना होगा क्योंकि पहले ये 78 रन पर खेल रहे हैं। 37 गेंदों का सामना किया अभी तक फयाज सरवर ने। तारिक हमसे दूर भागते हुए छोटा सा रन अप, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे और विकेट कवर की, गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता लॉन्ग ऑन बाउंड्री से फील्ड रहा है। 1 रन चहलकदमी के साथ इत्मीनान के साथ हासिल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 130 4 विकेटों के नुकसान पर 10 की औसत से रन आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस बल्लेबाजी में पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अच्छी जा रही है स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब की टीम। फिरदौस, No doubt about that. You always have the time to come back in the game. You say that they lost 2 wickets in over number 1, but after that it has been that one man is show Fayaz Sarwar. More than 60% runs has been scored by him. They stand at 130 and he is batting on 80. An absolute genius with the bat, and we're getting number of comments regarding Fayaz Sarwar. You can see Ahmed Dar is mentioning he's a run machine, and Pride of Zenigir Belt is mentioning Mir Bhai, and Azim Subhani is mentioning he's a gun player. There is no doubt about that. I do agree with that, as whenever I have seen Fayaz Sarwar playing, be it in Sopore, be it in Baramulla, to the rest parts of the valley, he has been an absolute gem with the bat. Javed Malik is watching us, and Mir Bhai, thank you brother, and Pareer Shad and Ilon Sajadi is watching from Sopore as well. 13 overs gone, 130 for the loss of 4 wickets. As Fayaz Sarwar holds the key here, batting on 79 of just 38 bowlers. And one important thing is that look at the strike rate of this man. He is striking more than 200. And his footwork has been absolutely brilliant today. He's been fantastic with the bat. Incredible efforts from him. And no, we have seen going across to the stumps. He's trying to cover the line and he is trying to work the ball in the gaps. He's playing with the field at this stage of the game. With 3 more overs to go, 18 balls to go. Take a look at the field for Fayaz Sarwar. Mostly tries to attack that mid-wicket and Scalag region. There is a deep backward Scalag in place at the boundary. And that mid-wicket fielder comes in and one man drops down to deep mid-wicket region. It is long gone for him. So 3 men on the onside protecting the boundary line. He got on the offside. 1, 2, 3. 4 fielders inside the ring, and there is Lon Momin, the skipper at long off as well. Took the catch of Shaukat Mir Zahid Majid to start the first ball. It's down the leg side. Fayaz shuffling across. It's way down the leg side. And umpire doesn't signal any wide there. Even though the batter was shuffling on the offside and it was way down the leg side. And Javed Malik sending in love for Ishfaq Malik here. He's a power hitter. First ball goes down as a dot. And 3 more overs to go. We'll have to wait and watch how Fayaz Sarwar goes with his business. Once again he goes across the line and he laps it over wicketkeeper's head.
goes down to the third man area, and the wicketkeeper, no short third man fielder, runs across and puts in a sprint and stops the ball. In the meantime, the batters will have to stay with a single, and Fayaz Sarwar with that single moves up to 80 for 80 of just 40 bowlers. It's 131 for the loss of 4. Quality stuff with the bat from Students Cricket Club as they rebuild the innings very nicely. This one hooks him on the onside in the gap down to mid-wicket area. Just a single until now. Zaid Majid has been good in this over. He's been fantastic with his lines and lengths, trying to bowl at the stumps. He's not trying to give Fayaz Sarwar that width or room to work with. He's on strike. We'll have to wait and watch. And War Imtiaz mentioning it's a one-man army is Ishfaq and Shubman Gill also watching the game, and this time outside off Fayaz Sarwar punches it, doesn't time it well, a lack of timing. You see he was trying to overhit the ball. Until now we have seen Fayaz Sarwar timing it nicely, focusing on timing, relying on timing, but this time he tried to hit the ball hard and over balancing, doesn't time the ball, goes down to extra cover, will fetch him a single. Just 3 or 4 balls in this over as he goes to Ishfaq once again, wraps him on the pad, and both the batters steal a single. Excellent cricket this is. Terrific running between the wickets, right in front of the bowler. They scamper through. 134 it is for 4. And Shubman Gill, thank you. And we got Wani Pesticides and continuously again sending in love for Ishfaq, saying he is dangerous with the bat. I can see Fayaz Sarwar has been more dangerous than the danger at this moment. This is outside off, catches the outside edge and will run away down to third man boundary for 4. Just wide outside off stump, as I was constantly saying that Zaid has been good in this over. He's constantly trying to bowl on the stumps, but first time in this over he bowls wide outside off, and Fayaz Sarwar's eyes lit up, and there wasn't a convincing one at all, but gets an outside edge as it flies away down to the boundary for 4. It's 138 for 4, done with over number 14 as well. Just 2 to go. Fayaz Sarwar is on 85. And can he get to his can he get to his century? It cannot get better than that. He's smashing a century in a finals game against a formidable side, against a comfortable side of SEER 11. They got a terrific bowling department, but Fayaz Sarwar living up to the expectation, is stood up tall, stood like a rock, like a wall today after losing 2 wickets in over number 1. Just 2 more overs to go and nearly 10 runs per over. There is no doubt about that. They can go beyond 150, 160. Fayaz Sarwar stays there till the end. And Mohammad Ramiz is also watching the game with Mohsin Kumar as well. Remember once again, here this is the final, as the 2 heavyweights of Sopore area are going head to head against each other in a mouth-watering clash. This has been until now, and even though we as commentators, the spectators here, or the viewers are watching us on both the platforms on YouTube and Facebook as well, and hopefully they have enjoyed each and every piece of it. They have loved each and every piece of this game today. It is the final of Police Martyers Cricket Cup, which was being hosted here at this iconic venue of Eden Park, Amity, Sopore. 12 bowlers to go, and having a word with each other, the skipper of the side, Lone Moment, and he has to play a terrific role when they come on to chase. He has been I guess his star of Sopore, Lone Moment, be it his batting or bowling or his fielding. An absolute athlete he is. And now he goes to Abid Lun, who bowled that first over of the game where he conceded just 2 and got 1 wicket. Even that one was a run out. But then in his very second over he was taken on by Danish Nazir, where he conceded 20 runs. First ball off the penultimate over Abid. And this is up in the air, a top edge. Wicketkeeper gobbles that one, and Ishfaq has to walk back. Shot off length delivery, sharp delivery. That was a quick delivery. That was, you can see from Lone Abid. Banged in shot, and he was trying to work him on the onside. Gets the big top edge,
which flies up in the air and wicketkeeper completes the catch. Ishfaq has to walk back. Fifth one goes down in last 7 or 8 balls. It has been a nice comeback by the side of SEER Sport. Just 8 runs of last 7 balls and a wicket as well. And they'll be trying hard to restrict them under 150, 160. And the batters will come on to chase. They have a good batting department as well. They have a good batting side as well. It promises to be a breathtaking encounter when they come on to chase. But on this wicket, which has got a good pace, the batters will have to bat really well to chase down that score inside 16 overs. Remember, it's only a 16-over game per side. You can see in the slow motion replays as well, the wicketkeeper completing the catch behind the stumps as the new batter is making his way at the centre. He's a lefty, I guess, and he gets ready to face Abid Lund. 2 for 21 today, and in a penultimate over where you got a lot of pressure because you know the batters are well set. And you know the batters are trying to take on the bowlers. They try to get as many as runs. And you're bowling the first ball, you're getting the wicket as well. It is Jia Malik who is the skipper of, who is the leader of the side of Students Cricket Club. He gets ready to face Abid for the first time. And he punches it off the back foot. And it's a good job getting back Fayaz Sarwar on strike. 10 bowlers to go now, 139 for 5. Fayaz Sarwar on 85. Once again the fielders dropping back at the boundary ropes, knowing that it is Fayaz Sarwar on crease, and he is going to take on the bowlers. Bashir Butt watching from Rafiabad, Shalkot and Arbaz as well. Don't know exactly whether is Masroor Malik in the lineup, and surely will provide you the information regarding that as he goes for the third time to Fayaz Sarwar. And Fayaz goes over extra cover. That is shot off the match. Incredible shot, unbelievable shot that was. Shot and wide outside off stump. He backs away, absolutely murders that ball over extra cover boundary for a 6. Shot and a half that was from Fayaz Sarwar. He moves on to 91 now, just 9 away and 9 balls to go. Incredible innings this has been from Fayaz Sarwar. Abid goes over the stumps again, and it's right in the block hole. Fayaz Sarwar jams that one in the gap and will fetch him couple of runs. We'll have to wait and watch. Oh, it's a run out, it's a wicket, and the skipper was late to react. The ball was in the gap. I see Lund Momin was too quick to get to the ball, pick the ball and fire in a bullet through, and Jia was caught well short of the crease. Fayaz Sarwar will remain on the strike. 2 more balls to go in this over. It's 146 for the loss of 6 now. He moves on to 92 in 16-over game. I believe that it's a good score on board with still 1 more over left, and the well set batter Fayaz Sarwar on crease. 146 for the loss of 6 it is. Abid Lund goes once again to Fayaz Sarwar, and Fayaz drives him down to long off, but there will be just a single. They won't be trying to take on Lund Momin, and they tried that Sam in the previous ball up against Lund Momin, and it was a bullet through from him, and he got the throw spot on and got that batter well short of the crease. It is 147 for 6. Fayaz Sarwar on 93. Masroor Malik and Arbaz. Here it is. You were asking about this man, and he drives the first ball in the air. It is, but Fayaz Sarwar denies the single. He wants that strike. Arbaz, here is Masroor Malik. You were asking about him. He is at number 8 for the team, and that final ball proves to be a dot ball. Nonetheless, a good over in terms of the game. Just 8 of it and 2 more wickets. 15 overs gone. 147 for the loss of 6. शुक्रिया फिरदौस। 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 147 6 विकेटों के नुकसान पर स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपोरा का स्कोर, और अब पहली पारी का आखिरी ओवर फेंका जाएगा। करीब 10 की औसत से रन आ रहे हैं स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपोरा के लिए, और देखना होगा इस आखिरी ओवर में मजीद कितने रन आ जाते हैं और क्या टारगेट यहां पे सेट होता है SEER 11 के लिए। 147 6 विकेटों के नुकसान पर, और फैयाज सरवर ने
एक लाजवाब जिम्मेदाराना पारी खेली, अभी तक 93 रन बनाए 45 गेंदों का सामना करते हुए। 200 से जायद का स्ट्राइक रेट फयाज सरवर के पास, और आखिरी ओवर में क्या अपनी सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब होंगे ये देखना होगा। और यहां बुलाया गया है जाहिद मजीद को। जाहिद मजीद 16वें ओवर की पहली गेंद के साथ फयाज सरवर के लिए गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट देखना होगा उस और कोई फील्डर तैनात नहीं, और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन को छू गई, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री को, और 4 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ इन 4 रन की मदद से 151 हो चुका है। 151 हो चुका है मजमूई स्कोर। 151। अब फयाज सरवर एक मरतबा फिर जाहिद मजीद की गेंद का सामना करेंगे। गेंद के एक मरतबा फिर गेंद को खेल दिया, और गेंद गोली की मानद बाउंड्री लाइन पार। 4 रन के लिए फयाज सरवर की सेंचुरी मुकम्मल होती हुई फयाज सरवर ने 101 रन बनाए। क्या लाजवाब पारी का मुजाहरा करते हुए फयाज सरवर की यहां पे सेंचुरी स्कोर होती हुई, और स्कोर बढ़ता हुआ स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का 155। अभी भी 4 गेंदों का खेल आना बाकी, 4 गेंदों का खेल आना बाकी है, और सामना करेंगे फयाज सरवर जाहिद मजीद की गेंद का। फयाज सरवर 47 गेंदों का सामना किया और 101 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फाइनल मुकाबले में लाजवाब पारी, जिम्मेदाराना पारी और सेंचुरी स्कोर की है फयाज सरवर ने। अगली गेंद को खेल दे, इस मतलब पूरी तरह बल्ले पर गेंद आई नहीं, 1 रन बना, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी नहीं, सिर्फ 1 रन, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 156। मीर बिलाल डाइस हमारे साथ जुड़े हैं तारपुरा कुपवारा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नासिर गनाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेचुलेशन सर्वर के लिए लिख रहे हैं, और इनके साथ साथ मीर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं मुदस्सिर मईदुद्दीन के साथ। जाहिद मजीद ओवर में 5वीं गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का मसरूफ मलिक के लिए। गेंद को हल्के हाथ के साथ खेला और खेलते ही दौड़ पड़े, दोनों बल्लेबाजों ने रन मुकम्मल किया। 157 स्कोर, अभी भी 2 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी। 157, 6 विकेटों के नुकसान पर फयाज सरवर 48 गेंदों का सामना किया, 102 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सामना करेंगे जाहिद मजीद की गेंद का। यह पहली पारी का आखिरी ओवर, 16वां ओवर इस वक्त जारी। जाहिद मजीद फयाज सरवर के लिए गेंद की बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया है, उस और फील्डर मौजूद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे फील्डर के हाथ में, और इस दौरान 1 रन का इजाफा स्कोर में। 158 स्कोर बढ़ता हुआ, अब आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। मुख्तार हमारे साथ जुड़े हैं, आमिर डार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तांत्रे मंजूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। पहली पारी की आखिरी गेंद, और सामने है मसरूफ मलिक। देखना होगा 158 पहले बोर्ड पर आ चुका है, यानी 10 रन की औसत से रन बनाने होंगे SEER 11 को, और इस मरतबा विकेट कीपर के हाथ में जाती हुई गेंद, रन कोई नहीं मिला, तो 16 ओवर्स का खेल मुकम्मल। पहली पारी इख्तिताम को पहुंची, फयाज सरवर नाबाद रहे 103 रन बनाकर, और स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब ने कुल मिलाकर 158 रन बनाए। 159 रन का हदफ मिला है SEER 11 को सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। तो देखना होगा दूसरी पारी का जैसे ही आगाज होगा, हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से SEER 11, both the openers striding out into the center. Remember, they're chasing 159 runs in their allotted quota of 16 overs. If you talk about the weather, it looks pretty gloomy out there, and overcast conditions here, chasing 159, and the new ball, with that brand new ball, it's obvious that it's going to swing away a bit. There will be definite help for the bowlers. The 2 openers into the center of SEER 11, up again as the likes of the bowling unit of Students Cricket Club Varpura. But the highlights of the innings today was the batting genius Fayaz Sarwar's scintillating century in the first innings, smashing 100 and
Three not out today, which helped the team to go up to a formidable total of 158 in their 16 overs in a finals game. The additional pressure on your chasing side. You need a better start with the bat. You'll be trying hard to get up to a good start with the bat inside those field restrictions. We'll have to wait and watch as the first ball of the chase goes away from us, and it's a good delivery as it zips off the surface. He's trying to work it on the onside, no addition to the total as wicketkeeper Asif gathers the ball cleanly. 158. Sixteen overs. This one once again, it's a better line, better length, as I said earlier, that pretty overcast conditions. You can see the dark clouds hovering above us, gloomy conditions here, and the winds blowing across the ground. It is obvious that the bowler will definitely get that help from the surface. The bowler will surely get that help from the surface, and two deliveries we've seen. The ball is definitely doing a bit, and this one is a short delivery. He goes off the back foot and works it in the gap, whips it away. No fielder protecting the boundary line, and the ball rockets away into the fence for four. As off the mark goes SEER 11. Three bowlers, and the boundary coming off ball number 3. 4 without loss, chasing 159. And the start in the power play will surely define this chase. The start in the power play will surely define the chase off the side of SEER 11. Sophie getting off the mark with that boundary. 5 without loss, and he has been joined by Farooq Haji as well, whereas Masroor Malik, the pace spirit, is the man leading the pace side, leading the side of Students Cricket Club in the bowling department. Masroof goes again. The batter was backing away, trying to whip the ball on the onside, wraps him on the pad, and we got Zubair Tantri watching the game, and Hilal Ahmed Bhatt as well with Irfan Wani. Dear brother, it is all okay now, it's working fine now. We're in over number 1 of the chase. Remember, it's just a 16-over game per side because the conditions aren't good at this stage of the game. You can see the cloud, so that is a batter stroke. Fine shot, just outside off stump. He stands tall, drivers him beautifully. Gorgeous shot off the bat, and once you pick the gap here, you get a boundary, and the ball rockets away once again into the fence for 4. 9 without loss. SEER 11, as I said in the first innings, during that course of first innings as well, they got a good batting lineup, a good side chasing, and Sophie getting those 2 beautiful boundaries off his bat. Masroor Malik were compensating, bowling it full at the hitting zone of the batter, and he says thank you very much. Masroor goes again. This is wide outside off, takes the toe end of the bat, rolls away down to third man. A slight fumble, and it allows the batters to cross for a single. 10 without loss it is. Chasing, it's a no ball signal there by the umpire. Oh, it is a no ball, and can't get better than that for Farooq Haji. He is going to face the free hit ball, and it's a bread and butter for the batter here, facing first ball, and it's a free hit for you where you don't get out, you just can hit the ball a long way. As Masroof goes over the stumps once again, down the leg. This is bad bowling, and he just helps it away and into the fence for 4. And expensive first over, quality start for SEER 11. A drag down the leg side, just tickles that one fine. It was a free hit delivery, swings his bat and swings the ball away and into the fence for 4. What a start this is for SEER 11. Masroor Malik is under serious pressure here. He is conceding boundaries, actually is leaking runs in over number 1. Needed a good start. As I said, that the power play, those first 4 or 5 overs were surely going to define the chase of SEER 11.
and in over number 1 they are already 15 on board. And now dances down the wicket, takes the ball on the full and just clips it off the pads for a single. And in the meantime, Hilal Ahmed Bhatt is watching the game with Imtiaz Chauhan. Mohammad, you watching from Drusu, and each and every viewer who has joined the live broadcast is commenting on us. Do mention which part of the valley you're watching us from so that we can send you a big shout out from Global News Network. And we're watching this on YouTube Sports Discovery, JK Sports Discovery as well. Mir Zubair mentioning that it has started to rain, but right now it is pretty overcast, but no signs of rain here at Sopore MET. And thank you Hilal Ahmed Bhatt for your love and support, and Lone Majid as well. First over, yielding 16 runs. A great start for SEER 11 with couple of boundaries, a no ball and a free hit as well. Everything happening in that first over, and proper entertainment for our viewers, for the spectators who are coming in numbers to watch this game, enjoying the game. Second over, we'll have to wait and watch who is going to start the proceedings. Both the openers starting in a positive way, both the openers starting in a quality manner in this chase nearly, which is 10 runs per over. You'll have to take attack on the bowlers. You'll have to be attacking while you're chasing 10 runs per over in the shorter versions of the game. First ball and driven on the up, good looking shot, but finds mid off, a bit wider off that fielder. There will be a single, and it is Aqib Ali who has started the second over. They need to bowl wicket to wicket stuff. You have to be disciplined with your lines and lengths, and some tight lines and lengths, and you will restrict the scoring opportunities of the batters. Will try to restrict the batters from scoring freely. It's 17 without loss as we are in over number 2 off the chase. Promises to be a great game between these two sides. Zakib goes again, and Umar Sofi goes down the ground, and he goes over long off for a 6. Unbelievable power generated behind that shot, and look at that, standing in his crease, and he thumps him down the ground. Unbelievable shot that is. You can see the shot of his bat, the power he generated behind that shot, just rooted to the crease. He lets the ball to come in and flat bats it over long off for 6. Unbelievable shot that was. Terrific ball striking. This is from this big man Umar Sofi. 15 of just 6 bowlers. Hilal Ahmed Bhatt mentioning that it's a 6, no doubt about that. Aqib goes again. Once again, this is shot. It's in the air and gone over the ropes. Back-to-back 6s. The big man has arrived here, Umar Sofi, and look at the shot selection of this man. I am quite impressed. Back foot, and he smashes the ball so hard, and off the back foot he can smash the ball over extra cover and long off. That defines that this man, he's got a lot of power, he's got a lot of time, natural timer off the ball he is. Back-to-back 6s are going to witness those hat-trick of 6s as pressure is on the bowler. Aqib Ali goes once again, and he goes in the air again, but it will be shot off the field. A lucky escape for the batter. He is trying to take the game away from the very word go. Those 2 6s off his bat were quite impressive. Off the back foot, and then punching it away, 1 over long off, and then second 1 over extra cover. Hassan Habib mentioning Umar Sofi can do it. It's 30 already on board. What a start this is for SEER 11. Aqib goes again, and he just punches it off the back foot down to mid-on. Will fetch him a single. 31 it is. We can say an absolute carnage with the bat. They are going all guns blazing here. Breathing fire with the bat. Chasing 159 in 16 overs. That is exactly nearly 10 runs per over. And they are coming all guns blazing here. The final ball of over number 2. Umar Sofi to face. It's way down the leg side. Can't bowl. They're asking for trouble here. And Umar Sofi just whips the ball away. And you can see it is just or I can say a hand-eye coordination of this man. He doesn't move his feet too much, but his hand-eye coordination is so brilliant, and he can smash the bowlers. Absolutely brilliant batting this is.
35 of just 2 overs, 19 conceded of Aqib Ali's previous over. Umar Sofi races to 26 of just 9 bowlers. Parvez, it is a blistering start with the bat. You're chasing 10 runs per over and they are trying to attack the bowlers from the very word go, from the very first ball. These are positive signs for SEER 11. बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस। और इसी तरह के आगाज की उम्मीद की होगी SEER 11 टीम के कप्तान ने। उमर सूफी 26 रन बनाए 9 गेंदों का सामना करते हुए। तीसरे ओवर की पहली गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को अपने ग्लव्स में कैद किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। ये तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। मसरूफ मलिक है बॉलिंग मार्क पर, 35 स्कोर बिना किसी नुकसान के। क्या लाजवाब आगाज फराम होता हुआ SEER 11 को। 159 रन का ताकुब करते हुए 35 मजमूई स्कोर। मसरूफ मलिक सामना करेंगे फारूक हाजी के लिए। गेंद को खेल दिया और गेंद 2 फील्डरों के दरमियान से होती हुई सीधे बॉडी लाइन को छू गई 4 रन के लिए। आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से जगह बनाकर गेंद को खेला और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री को छूते हुए 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस मर्तबा फारूक हाजी के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 39 बिना किसी नुकसान के। 39 हो चुका है स्कोर। मसरूफ मलिक एक मरतबा फिर अगली गेंद के साथ फारूक के लिए गेंद को खेल दिया। खेलते ही दौड़ पड़े जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 30 गज दायरे के अंदर 1 रन बनाने का मौका। और अब उमर सूफी एक मरतबा फिर स्ट्राइक पर आते हुए। इससे पहले ओवर में उमर सूफी ने बैक फुट पर जो 2 छक्के लगाए थे वो देखने लायक थे और ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया था। अब मसरूफ मलिक की गेंद का सामना करेंगे। 40 मजमूई स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी। मसरूफ हमसे दूर भागते हुए उमर सूफी के लिए गेंद की विकेटें छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश। ऑप्शन से बाहर नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से फ्री हिट होगी और यहां उमर सूफी के पास हाथ खोलने का भरपूर मौका। हिलाल अहमद भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, हसन हबीब जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। मसरूफ मलिक फ्री हिट वाली गेंद के साथ सामने है उमर सूफी के लिए बैक फुट पर गेंद को उठा दिया है। हवा में शॉट। 1 रन बना। दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे जी नहीं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 हो चुका है स्कोर। मसरूफ मलिक आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस आते हुए फारूक हाजी की सामना करेंगे उनकी गेंद का। और SEER 11 को मुकाबला जीतने के लिए 16 ओवर्स में चाहिए 159 रन, करीब 10 की औसत से रन बनाने होंगे। और बेहतरीन आगाज फराम होता हुआ 42 हो चुका है स्कोर। तीसरे ओवर का खेल जारी। अगली गेंद मसरूफ मलिक के हाजी फारूक के लिए गेंद को खेल दिया। बैकफुट पर रन के लिए दौड़ पड़े और रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 43। तीसरे ओवर का खेल जारी। दार कयूम बिलाल हबीब हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिलाल हबीब जो है वो यहां राय दे रहे हैं कि स्पिनर्स का इस्तेमाल किया जाए उमर सूफी के खिलाफ। अगली गेंद मसरूफ मलिक की गेंद को खेल दिया। हवा में शॉट। क्या फील्डर कैच लेने में कामयाब होंगे? जी हां, कैच लेने में कामयाब। और यहां उमर सूफी की इनिंग का खात्मा होता हुआ बैक फुट पर गेंद को निकालना चाहता इस मरतबा लीडिंग एज और बाकी का काम तमाम किया फील्डर ने। तो उमर सूफी की इनिंग का खात्मा होता हुआ उमर सूफी जो यहां पे खतरनाक साबित हो रहे थे उनकी विकेट गिरती हुई और मसरूफ मलिक के खाते में जाने वाली विकेट 43 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी SEER 11 की। 27 रन बनाए 11 गेंदों का सामना करते हुए उमर सूफी ने। डार कयूम हमारे साथ जुड़े। अल्ताफ अहमद भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस फाइनल मुकाबले का आनंद ले सके। यह फाइनल मुकाबला सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप का
इस वक्त जारी एमिटी स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीर 11 और स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा के माबैन स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 16 ओवर्स में 158 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर और 159 रन का हदफ मिला मुकाबला जीतने के लिए सीर 11 की टीम को, जिन्होंने अभी तक 43 रन बनाए। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। खालिद आए हैं नए बल्लेबाज, खालिद नए बल्लेबाज आए हैं और देखते हैं यहां पर किस गेंदबाज का सामना करेंगे खालिद। अजहर जानवारी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, अजहर जानवारी को बॉलिंग मार्क पर लाया गया है और सामना करेंगे उनकी गेंद का फारूक हाजी, जिन्होंने 13 रन बनाए 8 गेंदों का सामना करते हुए। उमर सूफी आउट होकर पावर लाइन वापस जा चुके हैं। उमर सूफी पहली विकेट के तौर पर जो है उनकी विकेट गिरी सीर 11 की जानिब से और अजहर जानवारी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। अजहर जानवारी को कुछ सलाह मशवरा देते हुए फयाज सरवर, जो कि मिड ऑफ पर फील्डिंग कर रहे हैं और फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के ओवर जारी है। सिर्फ 2 खिलाड़ी आप 30 गज दायरे से बाहर रख सकते हैं। मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। बकिया तमाम खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर। ऑफ साइड पर कुल मिलाकर 6 खिलाड़ी तैनात किए गए हैं और 6 के 6 खिलाड़ी 30 गज दायरे पर खड़े हैं। फयाज सरवर मिड ऑफ पर खड़े हैं और अजहर जानवारी सामना करेंगे उनकी गेंद का फारूक हाजी। फारूक हाजी के लिए अजहर जानवारी गेंद की बैक फुट पर गेंद को कट किया, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद सीधे बॉडी लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए और 4 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन के इजाफे के साथ 47। फारूक हाजी के बल्ले से आने वाला ये चौका 47 हो चुका है स्कोर। चौथे ओवर का खेल जारी। अगली गेंद के साथ अजहर हाजी एक मरतबा फिर बैकफुट पर गेंद को खेला, लेकिन इस मरतबा फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ 48 स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर सीर 11 का। अजहर हाजी नहीं बल्कि अजहर जानवारी जो है वो सामना करेंगे, उनकी गेंद का सामना करेंगे अब खालिद के लिए इस मैच में पहली गेंद होगी। खालिद एक मतलब फिर उछाल लेती हुई गेंद, पहले इरादा किया था ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलने का, लेकिन उछाल लेती हुई गेंद आखिरी लम्हात पर गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। हेलमेट अपना जो है उतारा, वहां पर खालिद ने स्पिनर बॉलर है और अब सामना करेंगे एक मतलब फिर अजहर जानवारी की गेंद का। अजहर जानवारी पारी का चौथा ओवर लेकर और मजीद यहां पर अभी भी 3 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी है। 48 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अजहर खालिद के लिए बैकफुट पर गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद विकेटों के साथ चिपके हुए आसिफ मिलर के दस्तानों में। अल्ताफ अहमद भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लिख रहे हैं कि रौफ साहब भी हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और इस मरतबा देखना होगा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ अब 49। शाहिद मीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वार इम्तियाज, अल्ताफ अहमद भट्ट और रऊफ साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रऊफ अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, जब गेंदबाज जो है उन्होंने अपने फॉलो में गेंद को खुद ही फील्ड किया। ओवर मुकम्मल होता हुआ 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 49 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और हमारे साथ सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रऊफ साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें हमारी जो है हौसला अफजाई करने के लिए। तो 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल, रन चेज में 49 स्कोर सीर 11 का 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 110 रन चाहिए, 76 गेंदों का खेल बल्कि 72 गेंदों का खेल बाकी। Got off to a blistering start when they scored 35 of just 2 overs, but Masrouf Malik has done the job. He's got rid of looking dangerous Omar Sofi, was caught at deep third man region. 49 for the loss of 1 in spurt in chase of 159. Once again, let me remind you that in the first innings the highlights was Fayaz Sarwar's scintillating century, and yet another century for this man. I can say simply genius with the bat.
That was an absolute masterpiece with the bat today, smashing 103 out of those 158 runs. That defines the quality of this man. And Shahbaz Gilani, weather update there, brother, is pretty overcast, pretty gloomy there. Dark cloud is hovering above the ground, but no signs of rain yet. But it looks like it might be soon raining. Suhail is also watching, and Altaf Ahmed Bhatti is also enjoying this game with Nasir War and Said Suhail as well. Masroof to continue on the pad. So that is glorious off his bat, just a flick off the wrist, and in the gap it rolls away into the fence for 4. Fantastic shot that was, and look at that shot on the pad off the batter, covers the line and just rolls it away. Those supple wrists, the ball races away into the boundary for 4. It's 54 in over number 5. 4.1 overs gone, 1 wicket down. As Masroof Malik goes over the stumps once again to Khalid. Short and wide, outside off stump, extra bounce this time. And Khalid was trying to get the gap on the offside. He got 1, 2, 3, 4 fielders inside the ring for this man. There is third man outside. We have one fielder at long on as well. 3 fielders are inside the ring on the onside. Next one as he drives it in the air and straight to the fielder. He was trying to clear that mid-on fielder who was inside the ring. A lack of timing. Catches that inside part of the bat and straight into the hand of mid-on. Another one goes down, and now they have lost Khalid as well. Masroof Malik striking back. I can say he has his revenge. He has that last laugh. He was taken to cleaners in his first over. He conceded 17, but now he's coming back very strongly. He's got 2 wickets in short span of time. 54 for the loss of 2 now. It is the new man, Lon Momin, into the middle now at number 4 for the team, who is leading the charge. Terrific all-rounder he is. He's got name and fame if you talk about cricket. This man can bowl, this man can bat, he can field. He's an absolute athlete. I can say he's a 3D player, a trailblazer of a player he is, as he makes his way at the centre for the team. As 54 for the loss of 2 it is. And Masroof Malik covering those basics right. He knows that how he need to bowl on this surface. At first they were costing him 16 or 17 runs, but after that, learning from your mistakes, learning those lessons, and now he's bowling really, really well. He's got 2 wickets, 2 for 29. He got the big man, Omar Sofi, was looking so dangerous. He was threatening to take that game away. Momin faces him for the first time, and he covers the line nicely. He goes right behind the line of the ball with bat and pack close to each other on the offside. And we get a single, and he will get off the mark. Mehraj watching from Trakpura Rafiabad. Walaikum salam, brother, welcoming you here. And Mir Manzoor, walaikum salam. Tawsif Ahmed watching from Varpura as well. I can say thank you all the beloved viewers for your love and support and watching this game, enjoying this game on Global News Network on Facebook and on JK Sports Discovery on YouTube as well. 4.5 overs, 55 for the loss of 2. So 11 overs left after that. It still need 103 runs to win the game. The grand final of Police Martyers Cricket Cup, hosted by this majestic venue of Eden Park, Amity. And from 2024, this ground has hosted more than 300 matches. Oh, I can say it is an incredible feat. Kudos goes to Sopore Cricket Association as well for uplifting the cricket here and promoting the game. Shahid Yusuf, thank you brother for your love and support, and Bilal Habib is also watching the game, mentioning we are both thankful to both finalist teams that wearing our jerseys. I guess BH Supports, thank you very much Bilal Habib for joining us. And done with over number 5, 55 for the loss of 2. Fayaz, Ahmed Fayaz is also watching the game. And he is watching us from Kapura, and the rest of the viewers who are commenting on this live broadcast. So as I said earlier, do mention which part of the valley, which part of the globe you are watching us from, so that we can send you a big shout out from our side as well. Mir Bayu is watching us on the platform of YouTube JK Sports Discovery.
and mentioning that SCC, that is Students Cricket Club, will win inshallah, and our blessings and prayers from his side. Thank you, brother. Azhar Janwari to continue. He goes for the first time to Momin, and he goes off the back foot using the depth of the crease nicely, and look at that shot, nicely gets it in the gap, and until the fielder cuts the ball off near the boundary ropes, both the batters will cross for a couple. There is the direct hit, and the ball ricochets. It gives the batters the chance to get that extra run. 3 runs conceded in that. It is 58 for the loss of 2. Now 101 needed of 65 bowlers. You keep wickets in hand, and then you have those chances of chasing that one down. While Mudassir is the commentator of JK Sports Plus, working with Mr. Aga as well, Fayaz Ahmed Fayaz. Thank you. And Khan Mosim SK, walaikum salam, brother. Azhar Janwari gets ready once again to Farooq Hajni, and he goes off the back foot. Find a shot cover, who is inside the ring. There is no addition to the total at all. Still stays at 58 for the loss of 2. 6th over is in progress. Hajni is on 18 of 14. Next delivery. Good line and good length. You vary the pace well. You keep the batter guessing what is coming out of your hand. As a spin bowler, as being a batter there, you'll have to read the bowler off his hand what is coming. But Azhar Janwari has done a good job. Deceives him, and the ball goes through the gate and into the stumps. You see, that is what I was mentioning. He is constantly varying his pace. He's keeping the batter guessing, and all of a sudden he bowls much slower through the air, and he bowls right full at the stumps, and the batter was late, and he was very late to drive the ball. The ball sneaks through hand gap between bat and pad. It was enough for the bowler to go through the gate, and it cannons on to the stumps. Excellent delivery that was from Azhar Janwari. Terrific delivery to get rid of Farooq Hajni. And all credit goes to the bowler here. And you see the momentum has been broken, just like Pakistani team. How I was talking about the dismissal. He was reading the mind of the batter there, knowing that he isn't using that front foot at all. He is just rooted to the crease, no footwork at all. And the bowler proving to be cunning fox there. That was a terrific ball, and he gets rid of him. Shahrukh Ahmed is also watching with Mushtaq Lone. And first ball, shot and wide, this is clears the infield. It will dribble away, 1 bounce and into the fence for 4. The new batter at the crease, and he faces the first ball. It's all about confidence, it's all about attacking mindset. Nasir Moeedin absolutely right. There was no footwork at all, even though he wasn't using the free feet in those previous balls against Azhar Janwari. He was rooted to the crease, just trying to defend was trying to go into the shell, but the bowler was realizing that, and all of a sudden he bowls full delivery, and the batter was caught napping, and the ball goes through the gate and into the stumps. 58. It is 68 for the loss of 3 now at the end of over number 6. 10 overs, and they need 97 more runs to win. 96 more runs to win the game. That's 9.60 runs per over. 6 overs gone, but Azhar Janwari, the spinners, doing the job, and the faster bowlers were bowling. The pace bowlers were bowling. The ball was coming nicely onto the bat. The batting was a bit easy, but now the spinners have been introduced, and somewhat and somehow they have applied brakes to the scoring rate. Nasir Moeedin and M. Iqbal, alaikum salam, and he's watching us from Bakipura. Shaukat Mir introduced once again. The spinner has been given the charge to bowl as Lon Momin gets ready to face. Off the back foot he goes, tap and run. He'll steal a quick single there, Lon Momin. Backing up fielder there. And Uwais Nazir Salafi is watching the game. Rather, it is Asif, famously known as Asif Miller in the valley. And Mushtaq Lone, and it is Mir Bhai who is watching the game, and he is watching us on YouTube platform. Next one off the pad, works it away in the gap. The fielder is going behind the ball, and he cuts it off near the boundary ropes. He was sprinting from that deep scallop region. 2 more runs added to the tally. 60
5 for the loss of 3. One good partnership and they will be really back into the contest. There is no doubt about that. Since mostly in a cricket you had the time to come back, to crawl back into the contest. As this one was trying to work him on the onside. Needed a direct hit. He was definitely short of the crease. A bullet throw from the fielder, but wasn't able to hit the target, wasn't able to hit the bullseye. Blindly trying to steal that single which wasn't available. The ball rolling down to short mid-wicket region. The fielder was inside the ring and he picks the ball in a quick time. Has a shy at the non-strikers, and the bowler and keeper, they were busy in appealing, but the ball was clearly down the leg side. Bilal Habib is continuously watching the game, is continuously keeping an eye, and now he comes down and he is pretty late on the ball, wraps him on the pad once again. This is excellent cricket going on. Both the teams, be it the batters or be it the bowling side, fighting it out in each and every one, each and every ball. With 2 more bowlers to go, 65 for the loss of 3. As Afaq faces him, he goes down once again. He doesn't want to waste any time here at the centre, but he had got plenty of protection on the onside. Will get a single. That takes the score to 66 for the loss of 3. With Amir joining us from Amir Hardware, Rohama and Mir Junaid. Walaikum salam. Next one to Momin, and he is watchful there, careful there. Defenders, that one on the offside. Dot and the over number 7 as well. 66 for the loss of 3. शुक्रिया फिरदौस। तो यहाँ 66 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। आपको रीप्ले के जरिए वो आफाक के खिलाफ जो यहाँ पे जो है एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी वो आपको रियल टाइम में दिखाना चाहेंगे, क्लोज एंगल से कि कहाँ पे पैड पर गेंद लगी थी, ये आप रीप्ले के जरिए देख सकते हैं। आफाक के खिलाफ ये अपील हुई थी और अब 7वें ओवर का खेल जो है शुरू होने को है। 7वें ओवर का खेल शुरू होने को है और 66 स्कोर 6 ओवर्स के इख्तिताम पर 3 विकेटें गिर चुकी है। इस दौरान कलाइयों के जरिए आफाक ने गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जानिब। 1 रन बना क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे, जिन्हें वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 67 हो चुका है। और ये नासिर मोहिद्दीन हमारे साथ, मीर जुनैद जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद मिलोन मोमिन के लिए, गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस और मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ अब 68, 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर द विकेट, 91 रन अभी भी दरकार। आफाक ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद बाउंड्री लाइन पार 4 रन के लिए। आफाक के बल्ले से आने वाला ये चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 72 हो चुका है। 72 हो चुका है स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर इस रन चेज में सीर 11 का 72 मजमूई स्कोर। 8वें ओवर का खेल जारी है। अजहर जानवारी है बॉलिंग मार्क पर। आफाक के लिए गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से फील्डर आए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के मजीद इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 हो चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर। 86 रन अभी भी दरकार मुकाबला जीतने के लिए। बैकफुट पर लोन मोमेंट के लिए गेंद को खेल दिया 1 रन के लिए। 1-1 रन बनाकर जो है पारी को आगे बढ़ा रहे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छी समझबूझ के साथ जो है यहां पर पारी को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अभी तक इस ओवर से 8 रन आए 5 गेंदों पर। आखिरी गेंद के साथ अजहर जानवारी, आफाक सामना करेंगे, गेंद की तिरछे बल्ले के साथ गेंद को निकाल दिया गली की जानिब, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बनाने का मौका। आफाक ने 10 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए। 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 75 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 84 रन चाहिए, मजीद 8 ओवर्स का खेल बाकी। 84 रन अभी भी दरकार सीर 11 को सोपोर मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए, बल्कि ये ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर करके बाकी दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और हमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से भी जरूर आगाह कीजिएगा।
वली मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हैं, आप ब्रह्मन रफ़ीआबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ तारिक वानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक वानी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नासिर मोहिउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हैं, मीर जुनैद के साथ, बिलाल हबीब जुड़े हैं, आमिर हार्डवेयर रोहामा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 75 स्कोर SEER 11 का 3 विकेटों के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल इस मरतबा किया बल्लेबाज आफाक ने जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। काफी देर तक गेंद हवा में रही लेकिन फील्डर उस और कोई मौजूद नहीं। लॉन्ग ऑफ से फील्डर आए, 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। बॉलिंग मार्क पर है अब गेंदबाज अगली गेंद के साथ। बैकफुट पर लोन मोमिन के लिए पैड से टकराई, जोरदार अपील वहां पर, और गरबिल के बोर्ड हो गए हैं। गालिबन ये देखना होगा, आपको रिप्ले में जरूर दिखाएंगे। ये बड़ी विकेट यहां पे मिली है लोन मोमिन के रूप में। लोन मोमिन जो है वो आउट होकर पवर लाइन वापस जाते हुए, लोन मोमिन की बड़ी विकेट यहां पे मिली है, और लोन मोमिन आउट होकर पवर लाइन वापस जाते हुए चौथी विकेट गिरी 76 के स्कोर पर। जब तक नए बल्लेबाज आते हैं दोबारा से आपको दिखाएंगे रियल टाइम में किस तरह से लोन मोमिन के पैड को गेंद लगी और उसके बाद धीरे धीरे सीधे स्टंप्स को छू गई। ये आपको रिप्ले के जरिए रियल टाइम में दिखाना चाहेंगे लोन मोमिन किस तरह से आउट हुए, और चौथी विकेट गिरती हुई लोन मोमिन के रूप में। मीर शाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। MET स्पोर्ट्स ग्राउंड सोपोर में ये मुकाबला इस वक्त जारी है, और खान रफ़ी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुहेल मुख्तार हमारे साथ जुड़े हैं, मीर शाहिद के साथ तारिक वानी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर बैक वक्त देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर 76 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल जारी है। शौकत मीर है बॉलिंग मार्क पर। इश्तियाक आए हैं नए बल्लेबाज। इश्तियाक इस मरतबा गेंद को कट किया लेकिन पॉइंट पर फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, बल्कि 1 रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस मरतबा 77 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर शौकत बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे उनकी गेंद का आफाक। 15 रन पर खेल रहे हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए, और आफाक के कांधों पर जिम्मेदारियां आए। इस मरतबा इस मैच का अभी तक का आने वाला बड़ा छक्का आफाक के बल्ले से आया है। ये छक्का ये आपको रिप्ले में स्लो मोशन में दिखाना चाहेंगे किस तरह से गेंद को खेल दिया, और गेंद स्केलर बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए, और जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया कि अब नजरें आफाक पर होंगी क्योंकि 4 खिलाड़ी पवर लाइन वापस जा चुके हैं। उमर सूफी और लोन मोमिन उनमें मौजूद, और वो भी एक बड़ी विकेट अभी पिछले ओवर में लोन मोमिन के रूप में गई। मजमूई स्कोर हो चुका है 83, 4 विकेटों के नुकसान पर 8.4 ओवर्स के बाद। कुल मिलाकर जो है 56 गेंदों बल्कि 44 गेंदों का खेल बाकी है। अगली गेंद शौकत की आफाक के लिए, गेंद का इंतजार किया, आखिरी लम्हात पर गेंद को खेलने में कामयाब। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 30 गज दायरे के अंदर, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 84, 5 विकेटों के नुकसान पर। इश्तियाक सामना करेंगे शौकत की गेंद का। शौकत अपने ओवर में आखिरी गेंद के साथ इश्तियाक के लिए बैकफुट पर गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला, विकेट कीपर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए बल्लेबाजों को, और 1 रन का इजाफा स्कोर में। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 85 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवैस नजीर सल्फी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्क्वाड जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब का, आप तक जरूर मेरे साथी फिरदौस पहुंचाएंगे। 9 ओवर्स का खेल हो चुका है, 85 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर। Scheme is evenly poised at this stage of the game with 7 more overs left, 6 wickets in hand, but it has been a slight comeback from Students Cricket Club. They bowled really well, especially the spinners, but as Fayaz Sarwar was holding the key for them now, it is Afaq who has got a lot to do. He has got the responsibility on his shoulders to carry the game forward, and Awais Nazir Salafi, he wants the playing 11 of Students Cricket Club Varpura
skipper Dr. Jia Malik, Akib Ali, Danish Nazir, Ishfaq, Masroop Malik, Nawaz War, Shaukat Mir, Azhar Janwari, Umar Farooq War, Asif Nabi and Fayaz Sarwar. Zoeb Javed Lun, brother, this is a 16-over game per side. Now 7 more overs to go. They need 74 runs to win the game. That is nearly 11 runs per over. Won't be a matter of time if Afaq stays. It will be an easy chase for them. And first ball of that over number 10 has been covered away down to deep cover region. And will fetch him a single. 86 for the loss of 4, but they got 4 big wickets. They got the wicket of Lone Momin, they got the wicket of Khalid Umar Sofi and Farooq Haji as well. And Afaq, he was trying to reverse sweep the ball. There is no connection with the bat and it goes into the gloves of wicketkeeper. He's always electric behind the stumps, Asif. So next ball, Afaq comes down the track. That's huge. He goes down and lofts the ball away and sends that one into the stands for 6. That is huge from the bat of Afaq. No fear at all. And look at that. Dancing down the track, meets the ball on the full, middles it well and absolutely smokes this one away and into the stands. Next one, clips it away on the onside and easy to available. This is terrific running between the stumps. This is fantastic running between the wickets. This game is going nicely at this stage. This game is poised nicely. As I said, even in the first innings it was Fayaz Sarwar's show. But now in the second innings, Afaq is lightening up this field. Pushes that one, cotton ball chance. And it goes down. Is it a catch or is it a match? Azhar Janwari has put down. And it is the danger man, Afaq, who's got the life. Half tracker, wide outside off, gets the toe end off the bat. Straight into the hands of the bowler and it goes down. Straight in and straight out. Afaq gets the life. 95 for the loss of 4 it is after the completion of over number 11. 10. 6 more overs to go. And they need 65 runs to win out of those 36 deliveries. And you put down Afaq, and I believe that you put down the match. It wasn't always easy. As a bowler, you're on your follow through, you're in that momentum, and the ball coming hard back at you. You need to be prepared as a spinner. And the catch went down. Afaq has been given the reprieve. It is Nadeem is mentioning it's SEC is going to win. And Uwais Nazir Salafi is mentioning that he needs to bring back Nawaz. Dear brother, we can't convey this message to the skipper as being commentators. We can give him those tidbits. Shahrukh Ahmed is also watching the games. 36 bowlers left. 64 to win from here on. And Afaq is going to hold the key for them. He is on 31 of just 18. Those 2 sixes off his bat were absolutely gorgeous. Gigantic sixes. One over that mid-wicket region was the biggest of the day. And then second one dancing down the wicket and lofting the ball away into the stands for 6. And I guess this game is 60-40 in favour of SEER Sports with 6 wickets in hand. 95 हो चुका है स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अजहर जानवारी आया है बॉलिंग मार्क पर और कुल मिलाकर अभी भी 6 ओवर्स का आना बाकी है और कुल मिलाकर रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 64 रन। 6 से जायद की औसत से रन बनाने होंगे। इश्तियाक और आफाक इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपुरा के लिए आफाक की विकेट जो है वो कीमती होगी। आफाक की विकेट कीमती होगी क्योंकि आफाक खतरनाक साबित हो रहे हैं स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब के लिए। 31 रन बनाए आफाक ने 18 गेंदों का सामना करते हुए। अब इशफाक को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। इशफाक पारी का 11वां ओवर फेंकेंगे। इनफरादी तौर उनका पहला ओवर सामना करेंगे उनकी गेंद का इशफाक वर्सेस इशफाक। फाइनल मुकाबला यहां एमईटी स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इस वक्त जारी।
सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट कप 2024-25 का। इशफाक के लिए ओवर द विकेट, गेंद की ऑप्शन से बाहर उछाल लेती हुई गेंद, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इट्स नदीम हमारे साथ जुड़े हैं, उवैस नजीर सल्फी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शाहरुख अहमद, नासिर मोहिउद्दीन और जुहेब जावेद लोन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इशफाक अगली गेंद के साथ, इशफाक के लिए अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे, गेंद की इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, फील्डर उस ओर जा रहे हैं, लेकिन गेंद देखना होगा क्या इशारा आता है। 6 रन का इशारा आता हुआ, 6 रन का इशारा आता हुआ। आफाक के बल्ले से आने वाला ही ये छक्का। आफाक, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि वो खतरनाक साबित हो रहे हैं यहां स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब वारपोरा के लिए। 37 रन पर खेल रहे हैं, 20 गेंदों का सामना करते हुए। एक मतबा फिर इशफाक की गेंद का सामना करेंगे। इशफाक आफाक के लिए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद के बैक फुट पर उठा दिया, यहां काफी देर हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? जी हां, कैच लेने में कामयाब और आफाक की इनिंग का खात्मा। ये बड़ी विकेट यहां पे मिलती हुई आफाक के रूप में, और यहां जश्न मनाते हुए स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब टीम के तमाम खिलाड़ी जो है जश्न मनाते हुए, क्योंकि जानते हैं कि बड़ी विकेट यहां पे हासिल हुई है आफाक के रूप में। आफाक आउट होने वाले 5वें बल्लेबाज, 101 के स्कोर पर यह 5वीं विकेट गिरी। आफाक ने 37 रन बनाए 21 गेंदों का सामना करते हुए। 33 गेंदें और रन दरकार 58, 33 गेंदें 58 रन दरकार SEER 11 को मुकाबला जीतने के लिए। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन आए हैं जो इशफाक का साथ निभाएंगे। मीर जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद वार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। They look over the moon, they are jubilant, jumping in joy. They know they got the big man, and it is Ishfaq who has done the job for the team. And Afaq has to depart after playing a fine cameo, 37 of just 20 balls, 5 down and 101. So first ball to the new batter, he backs away, and square drivers the ball, will get 2 runs on that. It is good running between the wickets, but Afaq's wicket will really boost the side of SCC. And now back into the contest. The big wicket of Afaq, I can say a big fish has been caught in the net. And at this stage of the game, it's azan time. It's called to prayer as we will take a short little break. We'll be back as after the azan time ends. अब तो चना आसान सोचूं छक्के तुलो का थी Global News Network. Let's buy it. Want it? Ready or not? Mr.
तो यहां छक्का आता हुआ जाहिद मजीद के बल्ले से आखिर ओवर में आखिरी गेंद के साथ गेंद की जाहिद मजीद के लिए एक मुतवा फिर उठा हुआ स्ट्रोक देखना होगा, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे बॉडी लाइन को छूती हुई ये चौका और इससे पहले छक्का आता हुआ। कुल मिलाकर इस ओवर से 14 रन आए। जाहिद मजीद 5 गेंदों का सामना किया, 14 रन बनाए, 11.4 ओवर्स के बाद स्कोर है 120, 5 विकेटों के नुकसान पर। यहां रन दरकार 39 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए और कुल मिलाकर 26 गेंदों का खेल बाकी है। अगली गेंद के साथ आकिब अली अंपायर को क्रॉस किया जाहिद मजीद के लिए और गेंद को खेल दिया। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता रन के लिए दौड़ पड़े, खतरनाक साबित हो सकता था और ओवर थ्रो की सूरत में दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 122 हो चुका है स्कोर। 37 रन चाहिए, 25 गेंदों का खेल बाकी। आकिब अली ओवर में आखिरी गेंद के साथ जाहिद मजीद ने 6 गेंदों का सामना किया, 16 रन पर खेल रहे हैं और सामना करेंगे एक मतवा फिर आकिब अली के ओवर की आखिरी गेंद का। आकिब अली मीर भाई हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं, जावेद परे उबैद जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इनके साथ साथ कुछ और दोस्त भी जुड़े हैं, बिलाल हबीब 50-50, शक्कूर अहमद, तजमुल इस्लाम। अगली गेंद आकिब अली की और बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, 1 रन के लिए 1 रन का इजाफा स्कोर में। ओवर मुकम्मल होता हुआ कुल मिलाकर यहां पर 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 123 स्कोर, 5 विकेटों के नुकसान पर 36 रन चाहिए, 24 गेंदों का खेल बाकी। 24 गेंदें, 36 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए और जाहिद मजीद जिन्होंने 17 रन बनाए, सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया, इशफाक की गेंद का सामना करेंगे। इशफाक को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, गालिबन देखना होगा। यहां स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब टीम के तमाम खिलाड़ी जो है वो आपस में सलाह मशवरा करते हुए कि यहां मौका मिला था एक मरतबा जाहिद मजीद की विकेट हासिल करने का, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद जाहिद मजीद ने उसी ओवर में 1 छक्का और 1 चौका लगाया। सलाह मशवरा जारी है स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब टीम के तमाम खिलाड़ियों के दरमियान और देखना होगा किस गेंदबाज को यहां पे बुलाया जाएगा। क्या इशफाक को लाया जाएगा या फिर किसी और गेंदबाज को। जहूर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डंडूसा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम हालांकि अब बरालूद है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मीर जुनैद भी हमारे साथ जुड़े हैं, शहजाद वार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आकिब के बारे में कुछ लिख रहे हैं और यहां अब किस गेंदबाज को बुलाया गया है ये देखना होगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या पार्टनरशिप को कोई गेंदबाज तोड़ने में कामयाब होगा ये देखना होगा। गालिबन इशफाक को लाया गया है, इशफाक को लाया गया है जिन्होंने अपने पहले ओवर में 11 रन दिए और यहां 24 गेंदों का खेल बाकी, 36 रन दरकार,
सोपोर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करने के लिए सीर 11 को। क्या रन्स बचाने में कामयाब होंगे इस ओवर में इशफाक, ये देखना होगा। इशफाक जो है फील्ड तरतीब दे रहे हैं, बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार। जाहिद मजीद सामना करेंगे उनकी गेंद का। इशफाक चले, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे। जाहिद मजीद के लिए गेंद की विकेटों में आती हुई गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, डीप बैकवर्ड पॉइंट से फील्डर आए, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, क्या पहुंच पाएंगे? जी हां, खराब थ्रो और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 125 रन दरकार 34। 23 गेंदों का खेल बाकी, 23 गेंदें और रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 34। इशफाक है बॉलिंग मार्क पर। जाहिद मजीद 8 गेंदों का सामना किया, 19 रन पर खेल रहे हैं। अगली गेंद का सामना करेंगे। गेंद की विकेटें छोड़कर गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा नाकाम। विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। टाइटन ट्रेडिंग रोहामा से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डार जावेद जुड़े हैं, तारिक वानी जुड़े हैं, वार सलीम हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर मजीद के बारे में जो है डार जावेद लिख रहे हैं कि डेंजरस बैटर है, तो देखना होगा। जाहिद मजीद अभी तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक मरतबा फिर इशफाक की गेंद का सामना करेंगे। गेंद के इशफाक के लिए और जाहिद मजीद के बल्ले से आने वाला देखना होगा छक्का। हालांकि कोशिश जरूर वहां पर की फील्डर ने, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं और गेंद सीधे मैदान से बाहर 6 रन के लिए। जाहिद मजीद के बल्ले से आने वाला छक्का और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 131 हो चुका है। 131 हो चुका है स्कोर। 28 रन चाहिए, 21 गेंदों का खेल बाकी। इशफाक बॉलिंग मार्क पर, जाहिद मजीद खतरनाक साबित हो रहे हैं यहां पर वारपोरा स्टूडेंट्स क्रिकेट क्लब के लिए। क्या जाहिद मजीद की विकेट हासिल होगी, ये देखना होगा। 21 गेंदों का खेल बाकी, रन दरकार 28। इशफाक मुड़े, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे। जाहिद मजीद के लिए पटकी हुई गेंद और गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की जानिब। फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। जाहिद मजीद के बल्ले से आने वाला चौका, लगातार रन आ रहे हैं जाहिद मजीद के बल्ले से। पहले छक्का और उसके बाद चौका और अब स्कोर बढ़ता हुआ 135 हो चुका है। 24 रन चाहिए, 20 गेंदों का खेल बाकी। इस ओवर में अभी तक 12 रन आए हैं, अभी भी 2 गेंदों का आना इस ओवर में बाकी। जाहिद मजीद 11 गेंदों का सामना किया, 29 रन पर खेल रहे हैं जाहिद मजीद। इशफाक ओवर में 5वीं गेंद के साथ हमसे दूर भागते हुए सामने है जाहिद मजीद। ओवर द विकेट जाहिद मजीद के लिए। ओवर पे इसमत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद और गेंद को आखिरी लम्हात पर रोकने में कामयाब जाहिद मजीद। डॉट गेंद। टाइटन ट्रेडिंग रोहामा से कुछ दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि सीमेंट और आयरन अवेलेबल है। और वार सलीम जुड़े हैं, शेख सज्जाद जुड़े हैं, सुहेल मुख्तार जुड़े हैं, अजहर हमारे साथ जुड़े हैं। इशफाक ओवर में आखिरी गेंद के साथ 19 गेंदें 24 रन दरकार जाहिद मजीद के लिए। इशफाक ओवर में आखिरी गेंद के साथ बैकफुट पर गेंद को निकाल दिया है, लेकिन इस मरतबा फील्डर मौजूद और गेंद को रोकने में कामयाब। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब 1 रन का इजाफा स्कोर में। तो कुल मिलाकर यहां 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 136 स्कोर सीर 11 का। 5 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों का खेल बाकी और रन दरकार 23 मुकाबला जीतने के लिए। This is surely going down the way. They had a chance to get Zahid Majid in that very first ball on a golden duck today, but unfortunately the catch went down at that third man fielder, put down an absolute easy catch. And after that Zahid Majid hasn't looked back. He has absolutely hammered the bowling unit of SCC Cricket Club. He's on 30 of just 13 bowlers and he has completely changed the whole course of the game. And now he has caught this game into the favour of SEER 11. 18 bowlers and 23 runs with 5 wickets in hand. And you will always back the batting side to chase this one down. But now they need a task. The bowlers have a task ahead. An uphill task to defend those 23 runs of just 18 bowlers, with Zahid looking absolutely dangerous now.
And let me remind you, he was put down on the very first ball he faced at that short third man region. That was an easy catch. And after that, he had back. He hasn't held it back. He has gone absolutely hammer and tonk. And now he's not out on 30 of just 13 bowlers. That is what he can do when you put a batter down. And he put down an easy catch, and now he is getting that game away. He is snatching that defeat out of the jaws. And now 23 of just 18 bowlers, Zaid Majid to face. Absolute danger he is. Shaukat Mir has been introduced into the attack, and the captain has faith in him. He is going to bowl that all-important over of the game. 136 for the loss of 5. Zaid Majid is 30 of 13, whole lot lies on him, and SEER Sports are relying on this man to get them over the line. And Mir Bhai is mentioning that this over is going to turn the situation of the game, but I do feel that Zaid Majid has already done this. We'll have to wait and watch. They still have the chance. They still can sneak through if they get a wicket of Zaid here. And first ball he places that one nicely in the gap. And it is all about, as we continuously say, holding the pressure. And Firdaus Star is mentioning that the club of SCC Cricket Club, they always do these kinds of things. And Mir Zubair is also watching the game. Bilal Habib, he mentions he feels that they need to bring Danish Nazir, but they have gone to Shaukat here. And Shahzad War absolutely right. You take those catches, you'll win the match. They put down Afaq, then 86, couple of sixes, and they put down Zaid on 1, and now he is on 31. Excellent cricket that is. Just doing there in singles and doubles. We get one more single here, and not trying to rush at the bowlers, not trying to hurry, and they know that the game is well and truly under their control. They're on that course. Shaukat goes to Zaid Majid, and he was trying to back away. Chance of a run out, and the fielder fires in a wayward throw. That could have been one more wicket for SCC, but today the fielding department has looked absolutely off colour. What kind of a throw was that? Just a couple of steps. Now there is an absolute drama happening. What was Zahid doing there? And he has been given out. What was Zahid doing? He has been given out. The on-field decision. First, the chance of a run out was there, and the ball at the fielder at covers fired a waiver throw. The bowler collected the ball, and he didn't dislodge the bails. Zahid, without consenting the umpire, I guess, was out of the crease. This is absolute drama, absolute cinema into the center. ना ये चाहन क्रीज मज पत द्राई बे वापस एवं अंपायर्स की I guess it's going to be a hot topic today. And the umpire is mentioning that he didn't consent to me, and he was out of the crease. And Irfat Khaja, sorry brother, we have the replays of just 10 seconds available. That is off the ball, not of the run-outs. 10 him out on that. He went to the crease, he grounded his bat. Then when the ball was onto the hands of the bowler, and he saw it is Zaid Majid, he was leaving the crease, and then he dislodged the bails, and umpire gave him out. Now the play has stopped. We don't know exactly what is happening out there. If he has been given out, then you have to leave the field. 140 for the loss of 6. Sixth one goes down, and here is the twist in the tail. We got the twist in the tail here. Zaid Majid has to depart, but it's very unfortunate way to get out.
It really is a heartbreaking moment for a batter here. And heartbreak for the side of SEER 11 as well. 6-1 goes down. They still need 19 to win. They still need 19 runs to win the game of 14 balls. Comedy happening into the center. रन्स के लिए गेंद मैदान से बाहर आपको दिखाना चाहेंगे। आबिद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं और इन 6 रन्स के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 146। ये इश्तियाक के बल्ले से आने वाला छक्का और इन 6 रन्स के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 146 हो चुका है। अब 13 रन्स चाहिए, 12 गेंदों का खेल बाकी। मुकाबला इंतहाई दिलचस्प बनता हुआ 13 रन्स चाहिए, 12 गेंदों का खेल बाकी है। कुछ टेक्निकल इशू आया था, उस वजह से जो है रुक के आप तक पहुंच रहा था हमारी लाइव ट्रांसमिशन, लेकिन उसके लिए माजरत खा। अब जो है इसे बेहतर किया हमने और इस दौरान जो है आउट होकर पावर लाइन वापस जाते हुए बल्लेबाज जिन्हें आउट किया करार दिया जाहिद मजीद, वो आउट होकर, लेकिन उसके बाद इश्तियाक आए और उन्होंने एक खूबसूरत सा छक्का लगाया। शेख सज्जाद हमारे साथ जुड़े हैं, तौहीद चंगा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डार रशीद जुड़े हैं और इनके साथ साथ आबिद अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, जावेद जुड़े हैं, आकाश मलिक जुड़े हैं और शाहिद मीर भी हमारे साथ जुड़े हैं हामिद डार के साथ। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साकिब वानी, तौहीद चंगा, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ कुछ लम्हों के लिए मुकाबला रोक दिया गया है, गालिबन जो पुलिस महकमे के ऑफिशियल्स हैं उनका आना है, तो उस वजह से 2 ओवर्स का खेल जो है रोक दिया गया है और 2 ओवर्स में 12 गेंदों का खेल, रन्स दरकार 13। तो यहाँ कुछ लम्हों के लिए मैच को रोक दिया गया है, गालिबन कुछ पुलिस डिपार्टमेंट का जो है कुछ कोई प्रोग्राम यहाँ पे है, तो उस वजह से रोक दिया गया है। अनाउंसमेंट भी हो रही है और हम आपको There was a slight pause in the game and now we're back again live as the equation stand is at 13 were carried of 12 ballers. Now they got 2 of the very first ball, then a wicket has fallen, a run out, and it is 148 for this loss of 7 wickets now. The scorecard hasn't been updated yet, we'll have to wait and watch what will be the outcome of this game. It's a fantastic game of cricket we have witnessed today, and both the teams are fighting it out, both the teams are sweating it out. 11 runs of 10 bowlers. This is the equation of the game for SEER Sports to win the game. Oh, absolutely terrific game, ultimate cricket today. SEER Sports and SCC fighting it out in the finals of Sopore Police Martyers Cricket Cup. We have just 10 bowlers left, and here is the news for the beloved viewers.
It has started to drizzle now. It has started to rain now. Now the rain has picked up. It's a bit heavy. As Ishfaq goes over the stumps once again. It's a rising delivery. And Asif really saves 2 runs for the team here. Acrobatic effort behind the stumps. It has been given as a wide. So they will get 2 runs onto that. 10 bowlers and they need 9 to win. What a match we have witnessed here today. SEER Sports versus SEC, a brilliant game of cricket between these two sides. And both the teams have shown lot of determination, both the teams have shown lot of character. And this is turning out to be an absolute blockbuster. The match has gone down the wire. Ishfaq goes again. And this has been nicely victory on the onside. Sensible cricket this is. And gets the single and the score moves up to 151. 9 balls to go. They need 8 to win. And it is raining now quite heavily. The game was paused at least for 20 odd minutes. The match could have been finished until now, but I guess there was some chief guests were yet to come, and that is why the game was started. Oh, that has been talked. It's in the air and taken at long on. Twist in the tail. 8-1 goes down, and it is Imran Manzoor who has to walk back. Ishfaq has done the job. He's caught the wicket. The batter thought he has hit a 6 and he was celebrating. That is why we say don't celebrate early. The batter was celebrating when he made the connection with the ball, but unfortunately it turns out to be a catch at long on and has to walk back. Imran has 151 for 8. It's anybody's game inside us. You close go with mobile. It's the Zurius go sorry draw. Pressure catch that was from the fielder at long on. And Asif Malik, don't celebrate too early. Imran Manzoor was celebrating when he made connection with the ball. He pulled away for 6. But the fielder stashed it at long on. He was targeting that long on boundary, and he offers a very, very simple catch. Mubin Reis is also watching this game as well. So now we have run a ball chase. 8 to win off 8 ballers. Best takers. Here's go bonus what is that? Bonus. Ishfaq to Shabir Ahmed. So again, that's a beauty of a delivery into the gloves of wicketkeeper. We have witnessed an unbelievable game today, and we have witnessed a fantastic game of cricket today. Both the teams stand on an equal chance to win this game and to get to the end, to go over the line. As Ishfaq gets ready to bowl the final ball. What a penultimate over this has turned out to be. He's got 2 wickets and just 4 runs in this over. Var Salim, Var Ibrahim, all supporting SEC. Final ball of over number 15 coming up. And this has been worked away on the onside. Will be staying with the single only. Don't try to take on that unnecessary run where you can lose a wicket as well. So done with 19. 6 balls to go, 7 to win. Var Salim and Darafan, walaikum salam. And her brother is watching from Patu Sarafiabad. 6 balls to go now, 7 needed to win. And SEC, can they defend those 7 runs? They have 2 more wickets to pick up. And conference going on into the middle. You can see right on your mobile screen is right on your screen is the bowling team is in a huddle. They're having a conference at the center. Who is going to bowl the final over? Who is the man who can seal them a victory?
and playing according to the condition, playing according to the situation of the game. And the batters, Abid Lun, Shabir Ahmed, now they got a job to do on their hands to get their team SEER supports over the line here. And Lala Feroz is also watching. Walaikum Salam Warathar. Come on, SCC supporting SCC here. What a game we have witnessed. A final of a thriller, a nail biter, or we can say an absolute cliffhanger. Who would have thought they needed 13 of 12 bowlers with 3 wickets in hand, with 4 wickets in hand. But that previous over of Ishfaq was a turning one. It was a game changer where he got 2 wickets and gave away just 5 runs. War Salim, Walaikum Salam, brother Da Rashid is also, Rashid is also watching with Arfat Afroz as well. Which way is this one going? Even though it is slightly drizzling at the moment, not a heavy drizzle, not so heavy, but slight drizzle at the moment, as we're continuously updating with the weather conditions. And since morning it was pretty overcast, gloomy, dark clouds, but now it is raining, as you might be witnessing it on your mobile screens. And Haris Habib is also watching the game. Walaikum Salam, Sanwar and Sheikh Reis. And what do you think, who is going to win, dear beloved viewers? Do mention in the comment section which team you are supporting today and which team do you think is going to get over the line to lift this prestigious trophy of Sopore Police Martyers Cricket Cup. 6 balls to go. 7 needed to win. Shahid Riaz, Warathar, Sanwar and Manzoor Raja as well. So it is Abid Ali who hasn't been up to the standards in the bowling department today. He has got a job to do. 6 bowlers, 7 to win. He has conceded 35 in his 2 first ball and he beats the batter. First ball and he beats the batter comprehensively. Abid, it hasn't been his day until now. This man has bowled 2 overs. He has conceded 35 runs. But now he has been given the ball by the skipper. He has caught the ball in hand and he has 7 runs to defend. Manzoor Raja mentions that SEER supports will win. Here goes Aqib Ali once again. And he goes cross-batted on the onside. He will get a single, just a single. And Sheikh Reis is mentioning, and we got Sanwar as well, sending in love from Varpura, Shahid Riaz. And getting immense love here, SCC Cricket Club. 4 balls to go, 6 needed to win. And Aqib Ali has caught the ball in hand. It hasn't been his day, but now he can be the hero. He can be the hero for the team here with 4 balls to go, 6 to win. As Abid Lun faces Abid. It's Abid versus Abid. He beats him. It's a dot ball. It is a dot ball. Bowls a length delivery just outside off. Abid was backing away. And no connection with the ball at all. It's all about nerves. You got nerves of steel there. You're feeling the heat. Even though it's pretty cold here. It's raining here. But the batter is definitely feeling the heat. He's feeling the pressure. Abid Ali goes once again. It's wide outside off. He gets it over back foot point. And he gets it down towards the boundary ropes. Brilliant effort by the fielder. He saved a couple of runs for the team. I thought that the ball will cross the boundary. But he covered the good ground. Dives full length. And saves 2 runs for the team. Giving it everything here. 2 balls to go, 4 needed to win. He has saved 2 runs there for the team. 2 balls, 4 away. 1 big hit and it will be the game for SEER 11. A dot or a wicket here and it will be the game for SEER 11. I have witnessed an Aqib as he goes to Abid, and Abid drives hard, but only as far as that extra run. It was just a single, but a slight fumble at long on has costed them 1 more run. Now they stand at 1. Final ball to go.
One ball. They need. Unbelievable game that is. It is. Vict is out. We have deep backward scare leg as well.